नमस्ते विद्यार्थी मित्र। विषय हिंदी इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है प्रार्थना गीत। प्रस्तुत प्रार्थना गीत के कवि है श्री राम नरेश त्रिपाठी। आइए विद्यार्थी मित्र, अब हम श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 के दिन उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के केरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी कविता कौमुदी 8 भाग में तथा ग्राम्य गीत कविता का संकलन है। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना कई स्कूलों में गाई जाती है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 के दिन हुआ था। રામ નરેશ ત્રિપાઠીનો જન્મ 4 માર્ચ 1889ના દિવસે ઉત્તર પ્રદેશના સુલતાનપુર જિલ્લાના કેરીપુર ગામમાં થયો હતો. તે કવિ, ઉપન્યાસકાર, નાટ્યકાર અને આલોચક હતા. તેમની કવિતા કૌમુદી 8 ભાગમાં તથા ગ્રામ્ય ગીત કવિતાનું સંકલન છે. તેમની મુખ્ય કાવ્યકૃતિઓ મિલન, પથિક, સ્વપ્ન અને માનસી છે. સ્વપ્ન પર એમને હિન્દુસ્તાન અકાદમીનો પુરસ્કાર પણ મળ્યો છે. તેમની હે પ્રભુ આનંદદાતા જ્ઞાન અમને આપો એ કવિતા કેટલી શાળાઓમાં ગવાય છે. તેમનું મૃત્યુ 16 જાન્યુઆરી 1992ના દિવસે થયું હતું. विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम तब याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में पढ़ेंगे। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह, शाम और हरेक ऋतु में कई मनमोहक बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत कविता में उनका सुंदर वर्णन किया गया है। સવારનું વાતાવરણ ખૂબ જ આનંદિત હોય છે અને પ્રકૃતિના, કુદરતના દરેક કણ કણ દર્શનીય લાગે છે, એટલે કે પૂજનીય લાગે છે. સવાર, સાંજ અને દરેક ઋતુમાં કેટલાય પરિવર્તનો કે જે મનને મોહી લે તેવા પરિવર્તનો જોવા મળે છે. પ્રસ્તુત કવિતામાં આવું જ સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. अर्थात इसमें राम नरेश जी ने कविता के द्वारा कुदरत के मनमोहक नज़ारों से प्रभु की याद आने की, जगत के सृजनहार के याद आने के बारे में कहा है. कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुबह के नज़ारे तथा बारिश के समय की मस्ती का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसे प्यारे प्यारे कुदरत के दृश्यों को देखकर हे प्रभु, हे सृजनहार, मुझे तुम्हारी याद आती है कि तुमने कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर दुनिया बनाई है. રામ નરેશજીએ કવિતા દ્વારા કુદરતના મનને ગમતા, મનને મોહી લે તેવા દ્રશ્યો દ્વારા ભગવાનની યાદ આવે એમ કહ્યું છે. કવિ ખૂબ જ સુંદર રીતે સવારનું દૃશ્ય તથા વરસાદના સમયનું એટલે કે ચોમાસાના સમયનું મસ્તીનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે આવા સુંદર કુદરતી દૃશ્યો જોઈને હે ભગવાન, હે પ્રભુ, હે જગતના રચના કરવાવાળા, મને તમારી યાદ આવે છે કે તમે કેટલી સુંદર, કેટલી અદ્ભુત આ દુનિયા બનાવી છે. विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम सब श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के तब याद तुम्हारी आती है काव्य का गान करेंगे. जब बहुत सुबह चिड़िया उठ उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है,
कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम सब इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अर्थात इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब बहुत सुबह, आपको तो पता ही है विद्यार्थी मित्र कि सुबह में सबसे पहले कौन उठता है, तो वो है चिड़िया। तो चिड़िया सुबह में जल्दी उठकर खुशी के यानी कि आनंद के गीत गाती है, और इसके साथ ही कलियां जो अपनी पंखुड़ियां बंद करके सोती होती है रात में, वो सुबह होते ही अपनी पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोल देती है, और ऐसा लगता है मानो दुनिया पर मुस्कुरा रही हो। और इसके साथ ही उस पंखुड़ियों में बंद खुशबू की लहरें भी बाहर आकर दौड़ लगाती है। तब कवि कहते हैं कि ऐसे सब दृश्य देखकर हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगत को बनाने वाले सृजनहार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, તમે બધા જાણો છો કે સવારમાં સૌથી પહેલાં કોણ જાગે છે, તો તે છે પક્ષીઓ. પક્ષીઓ સવારમાં જાગીને તેમનો મધુર ટહુકો ચાલુ કરી દે છે, અને પક્ષીઓના મધુર ટહુકાઓથી આખું વાતાવરણ આનંદિત થઈ જાય છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પક્ષીઓ પછી કોણ જાગશે, તો તે છે ફૂલની કળીઓ. કવિ કહે છે કે ફૂલની કળીઓ જ્યારે ખીલે છે ત્યારે એવો ભાસ થાય છે કે જેમ આ ફૂલની કળીઓ આ દુનિયા પર હસી રહી હોય. આગળ કવિ કહે છે કે ફૂલની કળીઓની અંદર રહેલી સુવાસ એટલે કે સુગંધ પોતાના ઘરરૂપી ફૂલોમાંથી બહાર આવીને દોડી રહી હોય એવું લાગી રહ્યું છે, અને કવિને પ્રકૃતિના આ બધા જ તત્વો મનને મોહી લે તેવા લાગે છે. અને આ બધા તત્વો અને આ દ્રશ્ય જોઈને કવિ શ્રી રામ નરેશ ત્રિપાઠી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે ઈશ્વર, હે જગતના સર્જનહાર, આ બધા દ્રશ્યો જોઈને મને એમ થાય છે કે આ કેટલું અદ્ભુત છે, અને મને તમારી યાદ આવી જાય છે. जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। इस पंक्तियों में कवि श्री कहते हैं कि जब बारिश की ऋतु में छम छम करके बारिश की बूंदे पृथ्वी पर गिरती है, और इसके साथ ही आकाश में चम चम करके बिजली चमकती है, और बारिश होने के कारण पृथ्वी पर चारों ओर मैदानों में वन बागों में हरियाली लहराती है, तब हे जगत के सृजनहारे, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। ચોમાસાની ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા આ ધરતી માતા આ પૃથ્વી પર પડે છે ત્યારે, અને જ્યારે આકાશમાં વીજળીના કડાકા થાય છે ત્યારે, વીજળી ચમકે છે ત્યારે, અને ચોમાસામાં વરસાદ થવાના કારણે પૃથ્વી પર આ ધરતી માતા પર ચારે તરફ વન, બાગ બગીચા અને મેદાનોમાં
અત્ર તત્ર સર્વત્ર એટલે કે ચારે તરફ લીલોતરી છવાઈ જાય છે ત્યારે હે જગતના સર્જનહાર, જગતની રચના કરવાવાળા, હે ઉપરવાળા, હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ढोकर यानी कि उसका बोझ उठाकर, हे जग के सृजनहारे प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सर्दी की ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है कि ये ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर यानी कि मस्ती को उठाकर, उसका बोझ उठाकर हमारे पास ला रही है, ऐसी परिस्थिति में हे जगत के सृजनहार, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे तुम्हारी याद आती है। अर्थात आ पंक्तिओं कवि कहे छे कि ज्यारे शियाळामां ठंडो ठंडो पवन फूंकाय छे त्यारे कविने एवं लागे छे कि जाणे आ पवन क्यांकथी मौज मस्ती लईने आवी रह्यो होय अने आवी परिस्थितिमां, आवा दरेक कुदरती वातावरणमां हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगतनो सर्जन करवावाळा सर्जनहार, अमने तमारी याद आवे छे। टूंकमां एम कही शकाय कि आ काव्य द्वारा कवि कहे छे कि ज्यारे वहेली सवारमां पक्षीओ उठीने कंईक आनंदना गीतो गाय छे, फूलोनी कड़ीओ पोतानी बंध પાંખડીઓ રૂપી દરવાજાઓ ખોલીને આ દુનિયા પર હસે છે અને આ પાંખડીઓમાં રહેલી સુગંધ બહાર આવીને દોડે છે ત્યારે હે પ્રભુ, હે જગતના સર્જનહાર, હે જગતની રચના કરવાવાળા, હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। આગળ કવિ કહે છે કે જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં ટપ ટપ વરસાદના ટીપા પડે છે અને આકાશમાં અંધકાર છવાઈ જાય છે, આકાશમાં વીજળી ચમકવા લાગે છે, વરસાદ થવાના કારણે પૃથ્વી પર, ધરતી માની ઉપર ચારે તરફ વનમાં, બગીચાઓમાં, બાગોમાં બધે જ લીલોતરી છવાઈ જાય છે ત્યારે હે જગતના સર્જનહાર, હે પ્રભુ, આ દ્રશ્ય જોઈને મને તમારી યાદ આવે છે। શિયાળામાં ઠંડો ઠંડો પવન ફૂંકાય છે અને આ પવન જાણે ક્યાંકથી મોજ મસ્તી લઈને આવતો હોય એવું લાગે છે। આમ પ્રકૃતિના તત્વોને જોઈ, પ્રકૃતિના તત્વોમાં થતા બદલાવને જોઈને કવિને જગતના સર્જનહાર ईश्वरनी याद आवे छे। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम सब इस काव्य में आने वाले शब्दों के अर्थ को समझते हैं। इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है, प्रार्थना गीत, श्री राम नरेश त्रिपाठी। इसके शब्दार्थ सुबह, सुबह यानी कि प्रभात, सवार, चिड़िया, चिड़िया यानी कि पंछी, पक्षी, गीत, गीत यानी तराना, खुशी यानी कि प्रसन्नता, दुनिया अर्थात जगत, विश्व, यह लोक, मुस्काती है यानी कि मुस्कुराना, हंसना, लहर यानी कि तरंग, हवा का झोंका, सृजनहार अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला, प्रभु, ईश्वर, ऊपर वाला, परमात्मा, हरियाली अर्थात हरे भरे पौधों का समूह जिसे हम हरियाली कह सकते हैं, हवा यानी पवन, ढोकर यानी कि बोझ उठाना, किसी वस्तु को उठाकर लाना उसे ढोकर कहा जाता है।